واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا
رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. सलवात हो गई खत्म जफा असगरे बेशीर के साथ हो गई खत्म जफा असगरे बेशीर के साथ हो गई खत्म जफा दौड़ते जाते हैं शख्स गरे दिलगीर के साथ दौड़ते जाते हैं शख्स गरे दिलगीर के साथ ज़ोर चलता नहीं तदबीर का तकदीर के साथ हो गई खत्म जफा किसमें दम था जोर डालेता सरे ज़ैनब से किसमें दम था जोर डालेता सरे ज़ैनब से हाय थे हम शीर के साथ हो गई खत्म जफा साथ छोड़ा नहीं ज़ैनब ने कभी भाई का साथ छोड़ा नहीं ज़ैनब ने कभी भाई का सरबरहना फिर दर दर सरे शबीर के साथ हो गई खत्म जफा असगरे बेशीर के साथ हो गई खत्म जफा सलवात Can we have one Surah Fatiha for such uncle? या जो प्यास से असग़र तमाम रात था ख़ैमाए हुसैन में महशर
तमाम रात प्यासों के इश्तियाक में मानिंद अब्र तर प्यासों के इश्तियाक में मानिंद अब्र तर छलका किया बहिश्त में कौसर तमाम रात कहती थी बानो था ये अजब दश्त हो लेना कहती थी बानो था ये अजब दश्त हो लेना दर दर गया है झूल में असग़र तमाम रात ज़ैनब से शाह कहते थे कल क़त्ल होंगे हम ज़ैनब से शाह कहते थे कल क़त्ल होंगे हम भाई को देख लो ख्वाह तमाम रात उम्मत को मेरी नानकी तू बख्शियो करीम उम्मत को मेरे नानकी तू बख्शियो करीम करते रहे दुआ यही सरवर तमाम रात बानो ये कहती थी के सरशे की खैर हो बानो ये कहती थी के सरशे की खैर हो मैं देखती हूँ ख्वाब में खंजर तमाम रात बाबा पे सदक़े होंगे तुम दूध बख्श दो बाबा पे सदक़े होंगे तू दूध बख्श दो कहता रहा ये बानों से अकबर तमाम रात प्यासों के इश्तियाक में मानिंद अब्र तर छलका किया बहिश्त में कौसर तमाम रात रोया किया सलवात talk about very briefly. As you know,
Every year when Muharram comes around, it brings grief, sadness, and tears with it. But this Muharram brought a different type of grief, a different type of sadness. We lost two great people this Muharram, whom we will never forget. Marhum Sayyid Allama Zishan Hadir Sahab and Marhum Sayyid Ali Muhammad Rizvi, known to us as Sachi Uncle. Just to spend a few minutes on each person, if I may, with the ijazat of the Moulana, of course. Allama Zishan Hadir Javadi Sahab was no ordinary man. He lived a life as an Azadar, and he died as an Azadar. He used to walk in the center and people would take notice. He would walk in and a trail of alims would be behind him, not in front of him, behind him. They would give respect to his knowledge, his piety, his love for Ahlul Bayt alayhi salam. So when the initial shock came that he had passed away, the tears, the grief, the sadness, those are in its own place. But after realizing that he had left this world, we should be a little happy, because he left this world on the same day Imam Hussein did. And there's no bigger ni'mat, no bigger mercy from Allah than this. When a child goes outside to play hockey or baseball or soccer in the rain, no matter how hard it rains, he never comes inside until he is tired. And when he walks in his house, he's dripping with the rain on his face. And the mother sees him like that. The same way the mothers would see rain dripping from the face of the child is the same way we saw the nur of Ahlul Bayt dripping from the face of Allama Zishan Haidar Javadi Sahab. He was no ordinary man. He lived no ordinary life. He died no ordinary death. So before we get saddened, before we cry, let's stop and realize that he left this world in Bibi's arms. He left this world with Mullah Abbas and Mullah Hussain. And aside from the grief, we should feel proud that such an alim, such a man, we were able to see and witness and hear. So please, for him and for all Muhammadin, Surah Fatiha, please. And within a week's time, we were told of another shocking death. 2 weeks after his time. 2 days, yeah. We all knew Sachi Uncle as if we'd known him all our lives. We grew up listening to him. Many of us would travel city by city just to hear him read. So when he left this world, we were a little shocked because we never thought that such an immortal man would pass away. We thought that he would make it or he would survive. So just like Javadi Sahab, when he left the world, the shock was there that Sachi Uncle is not there anymore. What do we do? But again, we have to realize that the beauty of his life and the beauty of his death go hand in hand. The same way Javadi Sahab lived a life in Azadar and died in Azadar is the same way Sachi Uncle did as well. On the 13th day of Muharram, he left this world. And there's no doubt in my mind, and there shouldn't be in any of yours, that when he was fighting for his last breath on his bed, that those words that he used to read before every noha, Sahib Zulfiqar al-Madad, he read. And there's no doubt that the same way he caused us to remember Imam Hussein, Bibi Fatima Zahra will cause us to remember him. So I say to Sachi Uncle, if he's listening, if he's here, if he's with us, that you can leave this world, that's fine. But your name will never leave us. Because you have a son who's been given the same gift as you have, and we will support your son in every way he goes. Because as long as Azadari is alive, his name is alive. I will know of him, my kids will know of him, their kids will know of him.
This is the guarantee we have to Satchenko. And tonight is a prime example of that. So once again, a Surah Fatiha, please, for Sayyid Ali Muhammad Rizvi, known to us as Satchenko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Moulana Hasan Rizvi is no stranger to this community. He's been coming here for many years, and he's known many of you personally on a rather personal basis. He's continuing his studies in Iran while he's living in Kitchener, and I'm very grateful that he could bless us with his presence today and hopefully make us ignorant people a little bit more knowledgeable. Again, those in the back, can I just please ask you to come forward a bit and make a nice audience for him? Inshallah, he'll be speaking on Imam Zaman alayhi salam. So, Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Habibi qulubina wa tabibi nafusina. Wa shafi'i dhunubina Abil Qasim Muhammad. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. باري محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. My respected elders, my brothers and sisters in Islam, my young brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have been granted by the grace of Almighty the opportunity to be in front of you. I have seen kids grow up in this community. When they were 4 or 5 years of age, I saw them. I saw tears in their eyes. Saw them grow up. And whenever I come here, I truly feel the love of Ahl Bayt al-Muslim. I see the light, I see the nur on many faces. That is apparent that they have the love inside. I see the unity among the people, especially the way you recite Dua Wahdat after namaz. That really touches my soul. I have not heard it. Even in Iran, people recite it that way. Which shows a lot of unity, which shows a lot of care for each other. And you basically have treated me very, very well, and I am grateful to you all. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase in all the tawfiqat that are for the best for you in this life and the hereafter.
chosen a verse of Quran which is anonymous with our Imam, which says that هو الذي أرسل رسوله, He is the one who has sent His Rasul, His Prophet, Bil-Huda, with the guidance, on the guidance, وَعَلَى وَدِينِ الْحَقِّ. Now, Bil-Huda wa Deen al-Haq. These are two things that are, if there is the right religion, it is the guidance. So Deen al-Haq is the true religion. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. Meaning, He wishes, He wants that religion to overpower all of the religions. This is in present tense, meaning it hasn't happened yet. So, it is a verse of Quran, it is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. It has to come true. Whatever is in the Quran is the truth. It has to come true. Not maybe tomorrow, but day after tomorrow. It will come true. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Even if the mushrikeen, even if the people who have gotten partners with Allah subhanahu wa ta'ala, even if they don't like it. In this verse, Deen al-Haq, I'd like to discuss that. If you can recite a surah, if you can recite a salawat loudly. The Holy Prophet, they said, Al-Aliyu ma-al-Haq, wal-Haqqu ma-al-Ali. Meaning, Imam Ali alayhi salam is with the truth, with Haq, and the truth is with Imam Ali alayhi salam. So if there is something which is true, Imam Ali alayhi salam is with that. If there is a religion which is true, Imam Ali alayhi salam is with that. True? Because Haq is used in that tradition, and Haq is used in the verse of the Quran that I just recited. So these two things have to be together. Wherever you see Haq, wherever you see the truth, Imam Ali alayhi salam is there. And whenever you see Imam Ali alayhi salam, the truth is there. So if there is a religion which is the true religion, is the religion of Imam Ali alayhi salam. And the religion which is of Imam Ali alayhi salam is the religion of the Holy Prophet. And the religion of the Holy Prophet is the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to see which is the true religion, see where Imam Ali alayhi salam is. Because according to this tradition, truth, Haq, and him, they are not separated, ever. And what religion is going to overpower all the religions is going to be the Deen Haq. No other religion. Because of the verse of the Holy Quran. And the surah here is Surah Tawbah, and the verse number is 33. If anybody wishes to see it, they can also look in the Holy Quran. So we have to see here if Imam Ali alayhi salam is standing on this side, and the religion, the true religion is standing on this side, then where should we stand?
If you stood with Imam Ali alayhi salam, you're on the true religion. And if you didn't stand with Imam Ali alayhi salam, where are you? And that is not the religion which Allah subhanahu wa ta'ala is talking in the verse that is going to overpower all the religions. So we have to keep this in our minds without a shadow of a doubt. No doubt should ever come in your heart that you are not on the right path. The way Imam performed their namaz, the way Imam performed their wuzu, the way Imam performed their hajj, the way Imam did every single action has to be true. The Holy Prophet is saying that. You cannot get truth, haq and Imam Ali alayhi salam separated. Okay, so we have established that fact. The other is that it is going to overpower all the religions. Meaning at that time there would be different religions. If there are not different religions, then how can one religion overpower other religions? So there has to be other religions. Now the question comes in our minds is that, is the religion going to do it itself? Is the religion going to overpower all the religions by itself? Can the message overpower anything without the messenger? Does the message has the strength to actually be of any benefit without the messenger? No. The message is nothing without the messenger because it will not reach. The messenger is there to carry the message. So who is going to be that person who is going to take this religion, the religion which is the guidance and the religion which is the true religion, and overpower all the religions? That person is no other than our Imam Zaman alayhi salatu wasalam. Now, our Imam is alive. We all believe that. We all know that they were born on the 15th of Shaban, 255 after the Hijrah of the Holy Prophet. 1040 years their life. You can say that how is it possible that a person can live to be that old? First, let's see, in the Holy Quran it says that the Hazrat Nuh alayhi salam lived over 900 years among the people. So I'm talking to Muslims here, so I'm bringing from the Holy Quran, but inshallah I will also try to bring some other arguments that according to science and according to logic we can understand. So Hazrat Nuh alayhi salam, they lived inside the people for over 900 years, and that is the period where they did the tabligh. So they did their tabligh in that period of time. They were living before that. So they lived over that amount of period. If you look at Ashab Kahf, they slept for 300 years. Right? What is old age? Old age, according to science, is your body cells, according to the external factors, they start to deteriorate as you grow older. For example, the certain foods that we eat, it has certain enzymes that they affect our cells. When we take stress, when we work too hard, if we are affected by any other disease, all these factors that are external factors, they affect us and our cells, they start deteriorating. But what if we could control those external factors? If we could control those external factors, then the cells would not be affected.
There are experiments that have been done to prove that point. But you see, the thing is, science is always relying on what? On our five perceptions that we have. Sight, hearing, smelling, right? Touch. Are these tools really strong for us to gain the knowledge? You see, the colors that you see are the different vibrations of light, that the mechanism that Allah subhanahu wa ta'ala has put in your eyes can detect those vibrations and interpret into different colors. What is the reality of the things? The colors that you see is not what it is. In so many other animals, what they see is different spectrums of light. They see different colors. They don't see the same colors as we do. They have a stronger sense of sight. But when we want to argue, we just say no. If the science says that something can happen, then it can happen. But if it says no, we can't accept it. What are we relying on? On those eyes that they cannot even judge the true colors that we see in our world? When a person gets colorblind, he can't see anything, any colors. The touch that we have, for the kids, you do an experiment. Take cold water and hot water, not boiling water. I don't want you to burn your hands. Make sure that your parents, they monitor that water that you're going to take. Take these two waters and luke water, like room temperature. Put your hands in the cold water and also in the hot water, which is not too hot. Put those hands in there and then put your hands in the lukewarm water, room temperature. Your hand that was in the cold water is going to register that the water is cold, and the hand which was in the warm or hot water is going to register that it is hot. But the water is on room temperature. Our hearing ability is according to the voice waves that are in the air. These waves, whenever I'm talking, whenever you talk, these waves are coming out and our ears can pick them up. Just like a radio or a TV that interprets the sound. These waves don't die. They carry on, they become weaker and they carry on. And what they do, they end up in the space somewhere. If there was a receiver strong enough, it could pick up those sounds. What I had said 20 years ago, it could pick that up. What is going to happen on the Day of Judgment? Our hands will speak. We will be able to actually hear our own voice. Because those sound waves haven't died. Our smell. If we catch a cold, we can't smell anything. The food doesn't taste good. So how is it possible for us to perceive and have just the knowledge just on these senses? And we say we don't want to believe of anything else. We're just going to believe these things. Is it right? Is it not possible that our ears can deceive us, our eyes can deceive us, our sense of touch can deceive us? $20 or $30 years ago, the things that those people used to look at as science fiction have come true now. If you look at the old Star Trek episode, they would have these little communicator devices that they would open up and they would talk. We have cell phones now, everybody's carrying one, who's anybody. It's so common. But if you took that cell phone 20 or 30 years back,
people would be saying it's impossible. This is something which is not possible. Did the man ever imagine that they would be going on the moon? Did the man ever imagine that he would be flying in the sky? That he would be getting food in the sky? No, they didn't. So why doesn't there a possibility exist that the being that gave life, that created life, that is the source of life, cannot increase the life of his loved one? Why is it so hard for anyone to believe? Doesn't he have the power? He does. See, the other thing is, everything is according to our own perception. You take somebody who's living in a village, and you go and you talk to them and you tell them that Toronto is a metropolitan city, right? And this person has never seen a city. So what is this person going to say? Okay, he's going to imagine in his mind that yes, okay, so according to my village, it will be what? Maybe 10 times bigger. And everybody that is roaming around right now, it will be just 10 times more of those people. Because he doesn't have any other perception in his mind. But that doesn't mean that metropolitan Toronto is that same way that he has perceived. Because we don't have any other frame of reference to see that somebody would live so long, it is very difficult for us to perceive. But that doesn't matter, that doesn't mean that it's not possible. The possibility exists. See, our knowledge that we have so much, we are so much proud about it and we rely on it so much. What is it? Our knowledge is just a bunch of pictures. That's all it is. You see, when you start reading, you look at the first book that you get. It says A is for apple. And when it says it's for apple, there's a picture of an apple. B is for a book. And wherever it says book, there's a picture of the book. And the child just this way ends up taking a look at the pictures. He'll say, what is this? What is that? What is that? What is this? And the father or the mother will be saying, okay, this is a camera, this is a TV, this is a ball, this is a car. So he associates those words with those pictures. If I say to you, father, everybody in their own mind is getting a different picture. If I say to you, mother, the picture of your mother comes. Those people who are not married, if I say to you, wife, does any picture comes in anybody's mind? If it does, they should tell their parents. Bari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So basically, this is the way we learn. Another example, for example, if you do not know what an island looks like, right? And I tell you, do you know how, like, have you ever seen an ocean? And you'll say, yes, I've seen it. Okay, I'll say, have you ever seen a piece of land? You'll say, yes, I've seen it. I'll tell you that island is a piece of land which is surrounded by water. In all of your minds, the picture of island has become apparent. Now when I say Allah subhanahu wa ta'ala, there's no picture. If I say love, there's no picture. If I say hate, there's no picture. But does that mean that those things don't exist? Just because in your mind you cannot picture that, does that mean that they don't exist?
If this is the limit of our knowledge, and we end up arguing, a doctor gives you medication. He says to you, okay, take this medication, so and so on. Has anybody ever seen the actual person going up to the doctor and saying, excuse me, but I don't agree with your decision. I think that this medicine that you have prescribed is the wrong kind of medicine. You've never seen that unless that person is a doctor. He can say, okay, yes, fine, I am a doctor and I'm giving you this opinion, this thing that you have prescribed for me is not right. The Holy Prophet says that Hazrat Imam Zaman al-Islam is alive. Our Imam Ali al-Islam says that they are alive. Hazrat Imam Hasan al-Islam says that they are alive. All our Imams, Imam Jafar Sadiq al-Islam, they have said they are alive. Who are we to say that they are not alive? Are we Hazrat Imam Jafar Sadiq al-Islam? Do we have the right? Allah subhanahu wa ta'ala say that yes, they are alive to the tongue of the Holy Prophet. Ma'azallah now. Are we? No, we're not. When there is a logical explanation that it is possible, and there is a scientific explanation that there is possible, even if there is no tangible perception that you have, that does not nullify the existence of that thing. So just keep that in mind. The other thing is that also comes in our minds is, what's the point? What's the point for our Imam to be in the hiding? Why does it have to be so long? It was 5 centuries after Hazrat Isa alayhi salam that our Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See, all of us have to be awake all night. So saying salawat loudly is a good way to wake us up. So 5 centuries passed and then our Prophet came. What was that point? What was the point of that? Why couldn't they come after the next day? Why couldn't they come after the 30th day or after a year or 2 years? You see, there are certain things that Allah subhanahu wa ta'ala does that it is very difficult for us to perceive. But if we look at history, how many people did we start with? Muslims. Let's say the total Muslims were 50,000 to 500,000. Let's say just for the argument's sake. If you look at the history, maybe there were more or maybe there were less. Let's say for the argument's sake there were 50,000 or 500,000. That sounds kind of okay because Islam had spread quite a bit in a lot of different areas when the Holy Prophet were alive. How many Shias did we have? 4. We had 4 Shias. How many Muslims do we have today? 1 billion and few. True? How many Shias do we have today? 300 million. So my math isn't very great, but those of you who have studied math and you can calculate the growth rate. Out of 500,000 or 50,000 in 1,400 years, the Muslims were only able to reach the number of 700 million. And Shias were able to go from 4
to 300 million. How come that happened? It was through the tribulations of Karbala, it was through the martyrdom of our Imams that this happened. And it was through the waiting for our Imam Zaman al-Islam that this happened. So there is a wisdom behind everything that Allah subhanahu wa ta'ala do and does. But it is very difficult for us to understand because our knowledge is limited. If you don't want to take anything from today, speech, just take that. Don't just think that knowledge is everything. That what you know or what this world knows or what this media tells you, that is what it is. I've just told you examples how limited our knowledge is. So 500 centuries, 5 centuries passed by and then our Prophet came. So in that time period that there was there, just like that, the number of people grew. And till today, from that day till nowwards, people are growing. Now, another thing to think about. Let's say after 20 more years, according to the growth rate, how many Shias are we going to have? A lot of Shias. MashaAllah, somebody's already calculated. A lot of Shias. So what our Imams did, if Imam Ali al-Islam did not retaliate physically on that day, they had a purpose in mind. If Imam Hussain al-Islam went and sacrificed himself and his family and his friends, they had a purpose in mind. If Imam Zain al-Abidin al-Islam, they sat down and they lived their life the way they did and they supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala and they left so many traditions to us, there was a purpose behind that. The purpose, you have it in front of you. So many people are their followers. They had all of these things in their minds if they stood up, they kept that in mind. Not just till today, I'm talking about till the day of judgment. They knew if they were going to stand up, what was going to be the effect of it till the day of judgment. And they knew if they were going to sit down, what was going to be the effect till the day of judgment. If they moved their hand, they knew what was going to be the effect till the day of judgment. And beyond. Okay, so hopefully that concept is clear in our minds, that why our Imam is in hiding. The other is, when you have something, you don't realize the worth of it. But when you lose it, then you realize the worth of it. Who's to say that if Imam had come and Imam had stayed, we had even any worth of him at all in our hearts? We have his value and his worth in our hearts because our hearts are longing to see him. Human beings, they go through trials and tribulations and hardships. They go through all of these things to go towards perfection. Hardships, tribulations, trials, these are the sources for you to reach perfection. If you see those families who have never seen any hardships, you see their children, how they have grown up. And you see the children of those families who have seen tribulations and hardships, you see how they have grown up. So this waiting and longing for our Imam has made us the way we are right now. The other thing is, what should we do? So these are general questions that are in the minds of our youth and our youngsters. That what should we do while we're waiting? So should we just wait just like anybody's waiting for the bus to come on the station?
or the train to come on the station. Just keep looking at the clock. Okay, it hasn't come yet, it'll come. Or like for example, when you're sitting in the majlis waiting for it to end, you're looking, okay, it's still going on, but it'll end soon. Should we wait like that? Or there has to be a certain different wait? The question is, what are we waiting for? We are waiting for our Imam to come and to guide us and to fill this world with justice. True? If Imam was to come today, right now, walk in to this majlis, what do we have to offer him? Seriously, what do we have to offer him? Can you imagine anything in your mind that you can offer our Imam right now? Is it knowledge? Is it the strength of your arm? What is it that he can use to spread justice in this world? And he's going to do it. He will have the miracles, but he's going to do it just like a normal person does, with normal conditions. If this was not the case, Imam Hussain never had to go to Karbala. The Holy Prophet never had to go through all the sufferings. If you're just thinking he's going to come and just do some miracles and everything is going to be okay, why didn't it happen for all the Anbiya? Why didn't it happen for all the Imams? According to some traditions, it says that you are going to be drenched in your sweat and blood when Imam comes. It's going to be so hard. Are we prepared? If Imam says, okay, Hasan, you go and you take care of these, for example, people, or you go and take care of this thing there and that. I don't have the ability. See, there's a verse of Holy Quran that is in Surah Tawbah as well, and the verse number I believe is 71, where Allah subhanahu wa ta'ala says that وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. The mu'mineen and mu'minat are the friends of each other. Okay? يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. So Allah subhanahu wa ta'ala says وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, meaning believers, men and women, they are friends of each other. Now what kind of people are they? What kind of people are they? وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. These are the kind of people that tell other people to do good deeds and they refrain them from doing bad deeds. Do you have any friends? You do. Do they tell you? Do they tell you to do good deeds and stay away from bad deeds? Even nowadays you see a friend doesn't let the other friend drive drunk and, because it's a taqaza, it is the condition of friendship. That if you are my friend, you should tell me what is good and you should tell me what is wrong. Otherwise, how come you are my friend? You can see me doing something wrong, but you don't stop me. And you see that I am not obeying the laws of Islam and you don't stop me. What kind of friend are you? You're letting me go astray, go to hell? Right. And then, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, and they pray. Right? وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. They pray and they give the alms, zakah, and they obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. Now the interesting point is here,
Why is it that the Amar bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar has come in the beginning of the ayah? And then all of those things have come afterwards. And in the end it has come that they obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. Why didn't praying namaz came in the front, Amar bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar second, giving zakat third, obeying Allah subhanahu wa ta'ala fourth? Because these things are established by Amar bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. If there is no Amar bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, these things will not be established. People will not pray, people will not give zakah, people will not obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. And one of the things which do lack in us is that it is an obligation on every one of us. Just like namaz is an obligation to you, it is an obligation for you to tell other people to do good and refrain them from doing bad with certain conditions. If you know that what you're going to say is going to have an effect, let's say not in the near future, even if afterwards, well, you know it is going to have an effect on that person, it is obligatory for you to tell them. If you didn't, you have done a guna. You've missed an obligation. But if you know that by saying this, there is going to be no benefit, and there's going to be some sort of harm on yourself or on somebody else, it is not obligatory for you to say it then. Don't take the law in your own hands. Because when you do that, you do more harm than good. People start getting away from the religion. How to do it? The slightest and the first level of that is just by your expression. Somebody is doing backbiting of somebody and you are in the company, don't laugh and say, yeah, that's right, that's the way it is. No, okay, turn your face or look the other way. Show that you are not agreeing with that. That's the least amount you can do. The other is that you can tell them with your tongue. Somebody's not praying namaz and you know that they're not praying namaz, go and tell it to them. Say it to them in a nice way. Look, brother, you are my brother in Islam. Even if we're not related with each other in blood, you're still my brother. And I want you to feel and see what I have gained from prayer, from namaz. Please pray. If you have any questions, if you want anything, I'm in your service. It's a good thing. I've done it and I can see it. Tell them. The other is with your actions. Somebody is going and you know this person is sitting in the car and he's going to go and, like everybody does now tonight, going to clubbing and drinking and all that. You can take the hand of that person and say, listen, don't do that. Stop what you're doing. It's not right. But not more than that, because that's not your right. That's why there is Islamic government to be there. That's why there is the law there. To take it farther than that. If you don't do that, and nobody does that to you, if you do that to somebody else, somebody will help you when you're down. But if it finishes in our community, in this culture everybody says it's nobody else's business but my business. We are raised, we are taught, being a single unit. Our family, our brothers, our sisters, our father, our mother, they all are one unit, one body, one person.
You are not different than them. If you do something, they get hurt. You cannot take yourself away from them. It's not possible. You are one. Just like the way your father, whatever is yours, it is your father's. And whatever is your father's is yours. The love, the care, everything is the same, is one. There is no individual thinking. Oh, I can just do whatever I want and I don't care about the family. It's not right. So this is what we should do. While we're waiting for our Imam to come, we should do Amar bil Maruf wa Nahy anil Munkar, right? We should pray our namazes, right? When we do have the ability, we should give our money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. And then the rest of the verse is Ulaika sayarhamullah, that in the near future Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful on them. Is coming of our Imam not a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? It is. Now the other thing that we could talk about is okay, we are waiting and we will be prepared. Our Imam is going to come. What are the signs? The signs that you see in the traditions and the society that you see today, the signs and the society are very similar. But if you go back 100 years or 120 years, did these evils not exist at that time? There's a lot of morality nowadays if you compare it with the old days. I'm talking about over 100 years ago, when this part of the world was in nowhere near to the bad things that you see around yourself today. The signs are there. They always were. So we can keep ourselves awake. Don't be going in that direction that, well, that sign hasn't come, so we're still okay. The signs are there. Our Imam can come any day. Any day. There used to be a person who used to sleep with a sword under his pillow. People used to ask him, why do you do that? He would say that I do that because if our Imam comes in the morning, I have to be ready. He used to sleep that way. Are we that ready? That's the question that you can ask yourself. Because I don't know any, on personal levels, I know very few people. Judge yourself before you're going to be judged. The other thing that I wanted to talk about is that there are certain accounts that people have seen our Imam. They have seen our Imam. And one of the accounts that I have read, I'm going to share it with you. It is, the person's name is Sheikh Abdul Wahab Shi'arani, and he has written a book which is called Tabaqat-e-Urafa. And the person that he's narrating this story from is Sheikh Hasan Araki. If somebody wanted the reference, I can also give them where they can find it. And it has been translated into English. So this person says that I was a young youth, right, in my youth, and I used to be a craftsman living in Damascus in Sham. And every Friday night we used to spend it drinking and gambling and playing. These are his words. And he says that one of those Fridays, a revelation came to me. And that revelation said, are you created for these deeds?
Did Allah subhanahu wa ta'ala create you for these deeds? And this person who heard that voice in his heart got changed so much that he started praying and he became a very good person. And he said that I went to Banu Umayyah's masjid, and there somebody was, I guess a masjid of that particular name or whatever, they said that that person was reciting about our Imam. And when I heard about that, I got very affected and I wanted to meet my Imam. And he says, whenever I used to prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala, I used to say that to Allah subhanahu wa ta'ala, that please make me meet my Imam. And he says, one of those nights that I was involved in a recommended prayer, after I had done it, I heard somebody in the back putting their hand on my back and saying, "Oh my son, Allah subhanahu wa ta'ala has accepted your dua and I am Mahdi." Tell me what you want. And this person said, would you please come to my house? And they said, okay. And they said that, please take me somewhere where there's not too many people. And this person said that I took them a place where it was lonely and it was away from other people, and they stayed with me for 7 days. Tabaqatu Urafa. Urafa Arif is a person who has gotten the know-how of Allah subhanahu wa ta'ala, not on the level of power of reasoning, but in his faith, in his heart. He has reached a very high level. And in that book, just the stories of those kind of people is narrated. So where did that man start from? He was a person who used to go on Friday nights and used to gamble and drink and play. And look where he reached. Look where he reached, that he got to spend 7 days with our Imam. Why can we do it? Why can't we do it? There was a person, he went to the alim and he said, listen, I really want to see the Holy Prophet in my dream. And this person said, okay, what you do is you eat a lot of salt before you go to sleep, and inshallah you will see them in your dream. So this person, time for him to sleep, and he would, instead of taking just a little bit of salt, he would just make his blood pressure go very high. So he'd have a lot of salt in him and then go to sleep. And then when he went to sleep, all he saw was ocean. That's all he saw was ocean. I said, okay, fine. The next day he did the same thing. Then he goes to the alim or the person that had told him, and he goes, listen, you told me that I would be seeing the Holy Prophet, but all I saw was just water and ocean. What happened there? I had a lot of salt, and not like I didn't have any salt. So the person said, when you had salt, you were thirsty for water. So whatever you were thirsty for, that's what you saw in your dream. But if you were thirsty for the Holy Prophet, you would have seen him. So if we cannot see them in our dream, or if we cannot see them in our daily life, if we cannot see them, it is because the thirst is not there. If you are truly thirsty, our Imam it has been narrated in Qum, there is a masjid, it's called Masjid Jamkaran, and the people, they come on Tuesday night there, and they spend the whole night there, and also according to the tradition, Imam, they also come there, and people, they worship and they pray all night long.
And then unfortunately, it's only on Tuesdays that a lot of people come. On the other days, that masjid is empty. But on that particular day, a lot of people come. And a lot of different miracles happen there, all of the time. There are books written now in Qom that are narrating all the miracles that have happened because of our Imam in that masjid. I would suggest to our youth, our elders have probably gone and seen the masjid, but if you go to Iran, go to that masjid. They said that there was this one person, there's always taxis and buses going and bringing the people there. In Iran, every car is your car. In Iran, every car is your car. How? If you have the money, all you have to do is just go like this on your hand, and even if it's not a taxi, anybody and everybody will stop for you and take you where you want to go. So this person was a taxi driver, and he took a person who was mu'min, he was an alim. He took him to the masjid, and after he had gotten to the masjid, this alim came out and he closed the door. Now the door was apparently closed a little bit strongly. So the person, when everybody got off, or when they were inside, he said, he swore, or he said some bad words about the alim and said, he did this to my car. And he says himself, he says, after I had parked my car, not a moment, there was a little bit of time span, and a person came to me and said, he said that here is some money which will suffice for the damage if it has been done to your car. But do not swear or say bad words to my soldier. If our Imam is so careful to us, how careful are we to him? So I would suggest to everybody who wishes to see Imam, what is more important is that he prays for you. More important than actually being in his company is that he prays for you. If he prays for you once, your this life and your next life is set. So give him gifts. Send salawat, do some mustab namazin, pray Surah Fatiha, pray Quran. Give gifts to my Imam. He doesn't need it, but it is for you to make a personal relationship with him. I've said this to you many times whenever I have come and spoken. Do that. Send salams to him, to them, whenever you wake up, when you go to sleep, after your namaz. Have a personal relationship with your Imam. He sees you, he hears you, he will help you. Okay, 1 hour has passed, and there were other things I want to discuss. And with your permission, I'd like to speak for another 10 or 20 minutes, please. You see, I get the opportunities whenever I do, and I get you sitting, and I be sitting up on top. I try to use as much as I can, which is beneficial on both sides, I think, and inshallah it is. There are a lot of questions in our minds about alam, because we're going to be doing azadari tonight, and matam, and nohas. There are questions in our minds about alam, and about tabut, or about zari, and we don't ever seem to get the answers we are looking for. And what happens is that slowly we start to drift away, and if there is a person who comes to you and says, what is this deal about alam, and you cannot explain it, you start getting doubts in your mind. Right? So I'd like to clarify that, if Allah subhanahu wa ta'ala will guide me, and He will. What is Khana Kaaba? What is Khana Kaaba? It is square. It has bricks, cement,
a door, and a cloth which is man-made. Didn't come down from the heavens. Man-made cloth. Roses and flowers are taken from Iran and they are put on the Anaka. What is Hajr Aswad? What is the black stone? What's the deal with all the Muslims going around and around of that square thing and having to kiss that stone? Why do they do that? You see, a bid'at, something which is a bid'at has to be haram and not allowed in every time. Not having exceptions. It should be wrong in every time and all the times, and no matter who does it. It is something which is not a part of bid'ah is something which was not a part of the deen of the religion and it's put into it, or it was a part of the deen and it's taken out of it. So we say that is the house of God. A non-believer can ask you, okay, you say that's the house of God, where is he in? He's living inside the house? Your God is inside that house? What a small little house he has. Look at my house. My house is much bigger than his. It has no colors. It has nothing. What will you answer? What will you say? You will say that is a sign. That is a sign of my God. And because it is a sign of my God, I pay respect and allegiance and I go around it. When you kiss Quran, what are you kissing? Paper. Doesn't Muslims, all of the Muslims, they will kiss Quran. What are you kissing? Paper. You are kissing that Quran because what is inside of it? Because it is a sign. Because it is to be respected. Not because of this paper, not because of the writing, but what is inside. Now, what is this qurbani? You have this animal, before that it is accepted as the animal of the sacrifice, has no respect. Once it has been accepted, for whom this universe was created. We are not kissing that cloth. We're kissing that to show our respect and our love to the being for whom the universe was created. If we kiss the zari of the Holy Prophet, of our Aimal al-Muslim, we are kissing not the metal. We are kissing that existence, that sign of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the mercy for all of the worlds. We are showing our love and our respect to that. If kissing is not right, kissing something which is non-object, it is not right to do, then why does Hajr Aswad get kissed all of the time by all of the Muslims? Like we said, bid'ah, if it is not right in one place, it is not right in any of the other places.
Why is it that Hazrat Yaqub alayhi salam, in Surah Yusuf, you all know that. Why is it that Hazrat Yaqub alayhi salam cried so much for the loss of his son? For the loss of their son, they cried so much that out of all of the prophets, they are known for crying. Just by losing a son. If crying on the death of a son or a beloved one is bid'at, then say to Hazrat Yaqub alayhi salam. When Hazrat Yusuf alayhi salam, they sent their kameez, their shirt, to go to Hazrat Yaqub alayhi salam and to be put on their face. I'm talking from Quran, I'm not talking from hearsay. Anybody who wishes to look in the story of Hazrat Yusuf alayhi salam, they can do that. There's a whole surah of it. When that kameez, that shirt was sent by Hazrat Yusuf alayhi salam, a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, towards the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, for that purpose and only purpose, that shirt was going to be put on their eyes so that they can get their sight back. Why didn't Hazrat Yusuf, without any wasila, without any medium, without anything, just did prayer? You and me, Allah subhanahu wa ta'ala, I pray that my father's eyes be corrected. What was the need of that shirt to go to them? And that shirt did have the effect, and their eyesight came back. If we make the symbol of alam as the symbol of our imam, of our Hazrat Abbas salamullah alayh, and we kiss it and we put it on our eyes and we say, may Allah subhanahu wa ta'ala, because of this, make my eyesight come back. Okay, they can say that it was Hazrat Yusuf's. No matter what, the action is still there. If the action itself is wrong, and you want to discuss about fazilat of Hazrat Abbas or Imam Hussain alayhi salam with Hazrat Yusuf, that's a different story. But if you want to just look at that action, then it is a different story. They say, why do we do matam? Also in the same surah, when you look at the story of Hazrat Yaqub alayhi salam and Hazrat Yusuf alayhi salam, there is a word in Arabic which has been used there, and what it means is that when you feel a lot of grief, is to hit yourself on the forehead. So if that word was used for Hazrat Yaqub alayhi salam, and what do we do? To show our remorse, what do? We take this hand and we put it on our chest. If there is anything wrong with having tawassul, of making our Aimma al-Muslim as part of seeking of forgiveness and our dua being accepted, then the blame can also go to so many other people who have made them as their medium. The first person, Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Zakaria alayhi salam. With doing tawassul, with making the Ahlul Bayt al-Muslim medium, they got Hazrat Yahya alayhi salam. If this is wrong, then what kind of deen are you having?
If it's part of your deen, if it is proven by your deen, and you take it out, if it is allowed by your deen, and you take it out, now who's doing bid'at? So don't think, don't have any doubt in your mind that what you are about to do tonight and what you do in Muharram or any of the other times. The land of Kaaba. Kaaba is on me. I am a sacred land. People come from far and above to see me, to come here, to pay respect to me. A voice came. A voice came from the land of Karbala. The land itself spoke and said, if I wasn't there, you would not have been there. It was because of my Imam, it was because of their sacrifices that Islam, not just Shia Mazhab, Islam itself remained and was saved. Do we get close to Allah subhanahu wa ta'ala by doing matam, by doing nohas, by doing azadari towards Allah subhanahu wa ta'ala, yes or no? Silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. The Holy Prophet themselves, they are saying in the Hadith Qisa, you recite it so many times, that whoever does friendship or shows love, I will show love to him. Whoever does harm or disrespects them, I will disrespect him. So what are you doing? You're paying your allegiance, you're paying your respect, you're paying your love. Do you think the Holy Prophet is going to disagree with you? No. He's going to pray for you. He's going to ask for long life for you. He's going to ask for guidance of you. You think in the majlis that Hazrat Zahra Salamullah Alaiha, they come. The Holy Prophet does not like that majlis. They do. Keep your minds clear. There's nothing wrong with what we do. Don't think that because in your own perception something is wrong, that it is wrong. If all of the ulama of Shia Mazhab, the people who have spent 20, 30, 40, 50 years studying this religion, are for this, and when I say, who have no knowledge at all, and stand up and say this is wrong, how is it possible they are allowing this? Inshallah, by given another chance, we could explain some more. We tried as much as we could to get my point across. Azadari, you see, was founded by young kids and women. The founders of Azadari of Imam Hussain al-Islam are women and young kids. They are the pioneers. You should be proud of yourselves. And then everybody else followed. See, it was my Bibi. It was Hazrat Zainab Salamullah Alaiha. Who had to go through a lot of hardships. A lot of hardships and suffering. There was also another Bibi, whose name is Hazrat Skina, who also had to go through a lot of suffering. So if those of you who have daughters and you understand that they don't feel peace of mind
until they lie next to you and sleep, you can have a better idea of how Hazrat Sakina felt when she lost her father. Those of you who are in her age can understand also better that how she felt when her earrings were taken away from her and she was hit on her face. When she ran in the battlefield of Karbala with her shirt on fire, saying, "Oh grandfather, where are you?" And when Bibi saw her running in the pitch darkness, went after her, trying to stop her. And she crying and not knowing that how far her grandfather really is. That he cannot come to her help. And she's running and she sees a person coming on a horse. This person is coming nearer and nearer. And the young lady, she gets scared that maybe it is somebody who is going to harm me. And Hazrat Zainab is after them. And the horseman comes close. And Bibi says, "Don't you know, don't come any close. I am the daughter of Ali. I am the granddaughter of the Prophet. Don't come close." And that man comes down from the horse and comes closer. And when he takes his veil and he says, "Oh my daughter, don't you recognize your own father?" And my baby says, "Where were you when they took our veils away? When Imam Hussain went to battle?" It was that Bibi who sacrificed her two sons. Two sons. She gave it away in sadaqah over her own brother. But I say, Bibi, your sadaqah was accepted. Maybe Imam Hussain al-Islam head did not stay on their body, but their name and what they fought for is still alive. And that Bibi who had to go on top and sit on the camel without any seating. It is the toughest thing for a Bibi in front of the non-mahram to go up and sit on a camel. It was that Bibi who had to grow in the streets of Kufa and Sham with her hair open and her back bent because of the hardships, because of the losses, in front of the people. It was that Bibi who made Sakina sleep and be close to her for eternity. When she slept, she got to see her father.
But what about my Bibi, who had to go through all the hardships and suffering to wait? My salams be to that Bibi who gave everything but didn't ask for anything. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all our sins. May Allah subhanahu wa ta'ala increase in our sustenance. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala make us better Muslims and give us the tawfiq to listen to our parents. All the mistakes and all the shortcomings that I had, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive that. May the reward of this majlis go to our Imam Zaman al-Islam. May all the marhum and marhumeen of all the families that are sitting here, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. May Allah subhanahu wa ta'ala make the coming of our Imam as soon as possible. Mazloom Hussaina Lajar Hussaina Lajar Hussaina Shab Shabi Matame 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 Hussaina Lajar Hussaina से पीट के सनम ने कहा हुसैना Mazloom Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina पापा तो जिसका है करार वो बेना Mazloom Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina जो कर न सकी पाएगा दीदार वो बहना Mazloom Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina मजलूम हुसैना मजलूम हुसैना लाजार हुसैना लाजार हुसैना शब शबी मातमे हुसैना Lajar Hussaina शब शबी मातमे हुसैना Karbala walo, ay Karbala walo,
शब शबर में दम शबीर के कहती है क्या ए मोमिनो तुमसे मासूर के जख्मी मेरा लाडला जख्मी मेरा लाडला मरहम मुझे दे दर्द हुई मरहम मुझे दे दर्द माग में शर्र में इन यासवार ये शबीर के चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मातम करो घर लुट गया शबीर का माँ आ गई शबीर के मातम करो शबीर का खंजर तले नजर में शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का तेरा पिता वैसा तेरा रोते रहे करबला कहने का जब बढ़ता होता भोले भाई मर गया लेता तलब कर रही गया घर रोड गया शबीर का ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले तज़किरा है हुसैन इब्ने अली का तज़किरा है उसने दिन को जिंदा किया है हुसैन इब्ने अली का तज़किरा है उसने दिन को जिंदा किया है हुसैन इब्ने अली का तज़किरा है ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मातम करो घर लुट गया शबीर का माँ आ गई शबीर की मातम करो शबीर का खंजर तले नेज़े पे भी करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर
नब की एक सीना अकबर का तीरों पे था लाशा तेरा रोती रही करबला खेमे के जब पर्दा उठा बोली बहन भैया मेरा लाशा तेरा खड़े गया करते रहे शुक्र खुदा ना भूले कभी नहीं भूले ना भूले कभी नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मारा गया गाजी तेरा फिर भी कहा शुक्र खुदा कासिम गया अकबर गया फिर भी कहा शुक्र खुदा हर लाश पर आते रहे करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का दरबार में बाजार में जिंदान में हर हाल में कैसी सितम सहती रही बेटी तेरी बहने तेरी देखा किए नेज़े से सब करते रहे शुक्र खुदा ना भूले माशाल्लाह शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले दिल हसन के मेहदी है तेरी आई दिल हसन के मेहंदी है तेरी आई दिल हसन के मेहंदी है तेरी आई दिल हसन के मेहदी है तेरी आई दिल हसन के मेहदी है तेरी आई और नाम पर दिल से हम शीन ने बनाई दिल हसन के मेहंदी है तेरी आई दिल हसन के मेहंदी है तेरी आई दूल्हा बने कासिम के रंगी सकीना दूल्हा बने कासिम के रंगी सकीना अफसोस से सुने भैया सुगराना के पाई दिल हसन मेहंदी है तेरी आई दिल हसन के मेहंदी है तेरी आई पामाल हो रही है शब तेरी निशानी पामाल हो
सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का और अकबर दिलगीर का या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा पामाल की खास में बेपर की लाश को पामाल की खास में बेपर की लाश को कुबरा कभी बेवा के या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा बेड़ी पिनाए धोरी बदन जख्मी कर दिया बेड़ी पिनाए धोरी बदन जख्मी कर दिया सजाद पे ये जुल्म किया फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा कानों से सकीना के उतारे गए गौहर कानों से सकीना के उतारे गए गौहर ज़ैनब से चीनी है रिदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलाम पे या फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा ए जान सकीना नादान सकीना ए शाम के जिंदान के मेहमान सकीना सकीना नादान सकीना शाम के जिंदान मेहमान सकीना देखो तो उठो खैर में किसका ये मातम देखो तो उठो खैर में किसका ये मातम पाना तेरी इस नींद के कुर्बान सकीना सकीना नादान सकीना शाम के जिंदान मेहमान सकीना उठती नजर आती नहीं ये नींद है कैसी उठती नजर आती नहीं ये नींद है कैसी ये ख्वाब तो करता है परेशान सकीना नादान सकीना नादान सकीना शाम के जिंदान की मेहमान सकीना ये देश नहीं लोग नहीं हम भी नहीं हैं ये देश नहीं लोग नहीं हम भी नहीं हैं किस तरह से हो दफन का सामान सकीना नादान सकीना नादान सकीना शाम के जिंदान की मेहमान सकीना असगर को करो प्यार लोग भर के बलाएं असगर को करो प्यार लोग भर के बलाएं जब खैर में तुम जाओ मेरी जान सकीना नादान सकीना नादान सकीना शाम के जिंदान की मेहमान सकीना वो रोज कैसे ली वो तेरा रोज करोना वो रोज कैसे ली वो तेरा रोज करोना बस आज से जिंदान है सुनसान सकीना नादान सकीना नादान माशाल्लाह बेटे शाम के जिंदान की मेहमान सकीना सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं है बाजार जफा सजाद मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं और बाजार जफा सजाद मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर पे
की जा कोई नहीं है बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा सज्जाद मेरे सर से आधा नीचा दे बलवे में नबी ज़ादी पेवाए गए दर दर मिल जाएगा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं ज़ार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा सज्जाद चलूं कैसे लाखों है तमाशाई याद आता है रे करके अब्बास मेरा भाई फरियाद करो तुझसे अब तेरी सिवा कोई नहीं है बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा सज्जाद मेरी देखो ये दर्द सताता है सरगाजी कनौके से अब खाके पे आता है सर मेरे खुले देखा हमें से बड़ा कोई नहीं है बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा मजबूर हूँ बेबस हूँ मेरो भी नहीं सकती दिलों की अजियत से मैं सो भी नहीं सकती इस दर्द मुसीबत में हम ज़ैफ़े मेरा कोई नहीं है बाज़ार जफा सज्जाद में ज़ैनब होता है कि जिंदा में मेरी बाली सकीना को क्या जाके बताऊंगी बीमार मदीना को मैं दिल पे उठाने को अब बाकी बचा कोई नहीं बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा बाजार सितम में था ज़ैनब का जब आलम मज़हर मलिक कैसे ज़ालिम ने कहा जिस दम है कौन तेरा वारे ज़ैनब ने कहा कोई नहीं बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा जमा है कूफियों का मेरे जीने की जा कोई नहीं है बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं ओ बाजार जफा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या
शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पर तमाचो के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, चादर छिनी खैमे जले, चादर छिनी खैमे जले। अब्बास के परचम तले रो कर कहे ये बीबियां। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रो कर कहे कासिम की माँ, रो कर कहे कासिम की माँ, मारे गए कासिम जवान, मारे गए कासिम जवान। ए लाल मैं ढूंढूं कहाँ, मेहंदी तेरी सेरा कहाँ। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो बावफा अब्बास था, वो बावफा अब्बास था, दुखियों की जो एक आस था, दुखियों की जो एक आस था। पानी लिया पर ना पिया, मासूम का एहसास था। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो ज़ैनबो गुलसूम थी, वो ज़ैनबो गुलसूम थी, चादर से जो महरूम थी, चादर से जो महरूम थी। उनकी अबा छीनी गई और शाम का बाजार था। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शामे गरीब आ गई, शामे गरीब आ गई, आबिद को हैरत खा गई, आबिद को हैरत खा गई। पलरे में ज़ैनब आ गई, अब्बास और अकबर कहाँ। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 या हुसैन। या रब ना सहर हो, 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 या रब ना सहर हो। प्यासों के लिए मौत का पैगाम सहर है, चल जाएगा शब्बीर की गर्दन से भी खंजर। या रब ना सहर हो, या रब ना सहर हो, या रब ना सहर हो, या रब ना सहर हो। इससे रात चमकते हैं फलक पर जो सितारे,
बनते जाएगा एक रोज में सहरा क्या बड़ा घर या रब ना सहर हो 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 अब्बास के शाने भी कलम हो लबे छिन जाएगी कल ज़ैनब कुलसूम की चादर या रब ना सहर हो 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 जो सीने पे शबीर के सोती है सकीना ढूंढेंगे न मिल पाएंगे लुट जाएंगे गौहर या रब ना सहर हो 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 बीमार का बिस्तर भी अदू खेचेंगे आकर पहनाएंगे बीमार को आहनी लंगर या रब ना सहर हो 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 ये रात अगर डल गई सूरज निकल आया मुड़ जाएगा परदेस में ज़हरा का गुले तर या रब ना सहर हो 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 हान दुआ ज़ैनब मुस्तर की यही थी है पालने वाले मेरे गुम्बे थे करम कर या रब ना सहर हो 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 बेटा हूँ मैं अली का बेटा हूँ मैं अली का नवासा रसूल का ज़ैनब बहन है मेरी यही था बतूल का कुर्बानियाँ ये मेरी बुलाए न जाएंगी जब करबला बसेगी सदाएं ये आएंगी हुसैन या हुसैन हुसैन बेकफन हुसैन बेखतम बाबा अली के हाथों में जो जुल्फ़िकार है मखसूस उसके कफ के नस्लों पे वार है मैं जंग क्यों करूं के हसन का मैं भाई हूँ तुम मुनकिरे खुदा में खुदा का फिदाई हूँ हुसैन बेकफन हुसैन बेखुदा मेरे लिए रसूल के सजदों में तूल है मर्जी मेरी खुदा को नबी को कबूल है सूखे गले पे मेरे जो खंजर चलाएगा मरकद में फातिमा को अली को सताएगा हुसैन या हुसैन हुसैन बेकफन हुसैन बेखुदा उतरा था आसमां से सितारा हमारे घर काबे की सिमत देखो तो दीवार
वतन हूँ, गरीब और दयार हूँ। ज़हरा की बेटियों के लिए दिल फिगार हूँ। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। करने का कष्ट करके जो आता वतन से दूर, बच्चों को साथ अपने न लाता वतन से दूर। बहनें भी बेटियां भी मेरे साथ साथ हैं, मेहमान करबला में तेरे हम फुरात हैं। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। चाहूं तो संगरेज़ों से पानी निचोड़ दूं, रिश्ते बला के सहरों को सर से जोड़ दूं। खुद को खुदा के हुक्म से मजबूर कर लिया, पानी से अपने आप को कर दिया। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। पानी है मेरी माँ के महल में लिखा हुआ, बच्चों के मेरे फिर भी ये पानी न मिल सका। सैराब हो रही है तितर और अस्त भी, आले नबी के होठों पे लिखी है तशनबी। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। अब मेरे बाद अहले हरम को उठाएंगे, बेपर्दा अश्कियाँ उन्हें बल्ले में लाएंगे। सीने पे सोने वाली तमाचे जो खाएगी, मुझको सदाएं देंगी चचा को बुलाएगी। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। कहते हैं लोग तेरे अज़ादार या हुसैन, रहबर है अपना तेरा अलमदार या हुसैन। पैगाम तेरा देते हैं यूं सरवरो रेहान, जैसे नमाज़े इश्क हुसैनी की हो अज़ान। हुसैन या हुसैन, हुसैन बेकफन, हुसैन बेखता। हुसैन, 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 हुसैन। एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सज गए कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बना, सज गए कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बना, सज गए कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बना। माए कर बेटे
सजाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार अपनी चादर की मुहासिन को बुलाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई कैद में बाजी सकीना को मिला बाबा का सर कैद में बाजी सकीना को मिला बाबा का सर कैद में बाजी सकीना को मिला बाबा का सर रख कर जो सोई आज जगाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई
या रब कोई मासूमा एक जान तन्या हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा रिच जान तन्हा हो या रब कोई मासूमा ये जान तन्हा हो तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा रंजान तन्हा हो या रब कोई मासूमा रंजान तन्हा हो वाले आए बाबन नवाए हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या रब कोई मासूमा इंसान तन्हा हो या रब कोई मासूमा इंसान तन्हा हो
किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया लहू के कतरों की तस्वीर खाक पर पढ़कर लहू के कतरों की तस्वीर खाक पर मोहल्ला हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया बाल खुश्क से जाते थे आयतें पढ़ते बाल खुश्क से जाते थे आयतें पढ़ते कलाम बात को हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया यही है बात जो छाई है दिल पे तारी की यही है बात जो छाई है दिल पे तारी की तो जहां में वो तारा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया जाते उम्मत यासीन में अब कलाम नहीं जाते उम्मत यासीन में अब कलाम नहीं नबी के बाद को पूरा हुसैन ही किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया आतश वो धूप वो फौजों में लौके असगर को आतश वो धूप वो
सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा 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 हुसैन ही ने किया खलील बल तो गया था खुदा का घर लेकिन खलील बल तो गया था खुदा का घर लेकिन बुलंद सजदे से उठा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया परस्त तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया Patient with us. We still have a long list of readers, and inshallah your child will get a chance just like everyone else. And I request all the parents to please also stay after the break for the encouragement of the kids, and obviously to stay indoors as much as possible. Thank you. ईमानो
इज्जत ओ जिल्लत हयात मान ईमान ओ सियासत इज्जत ओ जिल्लत ज़मीन करबला ने सारे पैमाने बदल डाले ज़मीन करबला ने सारे पैमाने बदल डाले जो थे अक़दार सलाम
कंधे पे मश्क मश्क में दिल है दिलेर का, दरिया को छीन लेना नहीं काम देर का, एहसान तिश्नगी में ठिकाना गैर का, बिगड़ा हुआ मिजाज है, बिगड़ा हुआ मिजाज है हैदर के शेर का। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। चेहरा है वल कमर की ज़ियाओं से नूर नूर, आँखों से झांकता हुआ वो नज्म का सुरूर, बाला कदी है ऐसी कि शर्माए कोह तूर, जुल्फे दराज ऐसी, जुल्फे दराज ऐसी कि वल्लैल का शऊर। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। प्यासा शेर घाट का रास्ता न रोकना, आंखें झुकाओ शेर की जानिब न देखना, कैसे बचेगी जान ये लाजिम है सोचना। अब्बास है जलाल में, अब्बास है जलाल में हरगिज़ न टोकना। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। तेवर बता रहे हैं क़यामत उठाएगा, तेरे नजर से इसकी खुदा ही बचाएगा, आया जो सामने कोई वो मारा जाएगा। एक मश्क में फुरात को, एक मश्क में फुरात को भर कर दिखाएगा। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। कब्जा हुआ फरात पर अल-क़िस्सा मुख्तसर, पानी को देखा फट गया अब्बास का जिगर, आंखें लहू लहू हुई बच्चों की प्यास पर, बारी सकीना बच्चों से, बारी सकीना बच्चों से कहती रही उधर। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। ख़ैमे के दर पे प्यासी सकीना थी मुंतज़र, जुम्बिश अलम की देख के देती थी ये खबर, तृष्णा लबो दुआ में तुम्हारी हुआ असर। वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है तथा का अलम नजर। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। आया अलम जरूर मगर खून में भरा, ज़ैनब ने सर को पीट के शब्बीर से कहा, क्यों गम कमर है आपकी गाजी कहाँ गया। बोले हुसैन अब कोई, बोले हुसैन अब कोई, बोले हुसैन अब कोई प्यासा न दे सका। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। हाथ में अलम और मशके सकीना, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। सोरग से चौक कर उठी, बोली सर को पीटती हुई, हाय मेरी नींद उड़ गई, हाय मेरी नींद उड़ गई। मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत
तरफ अज़म है खूब तर, झुक गई ये शाह की कमर, जा रही है जिस तरफ नजर, बीबियां खड़ी है नंगे सर। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। हाय हाय काज़िमे जवान कर रही है जिसकी माँ, हिल गए ज़मीनों आसमान, जब दुल्हन ने चूड़ियाँ। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। एक बच्ची सी गए पधर, ढूंढती रही इधर उधर, खाक सो रहा था खाक पर, जिसके तन से कट चुका था सर। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। कहते हैं रसूल ज़ादियाँ, हाथ में बंधी है रस्सियाँ, देखा जावा है हमारी यहाँ, तू रो रहा है सारवां। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। ख्वाब ये बड़ा अजीब था, बादशाह दी गरीब था, क्या यही मेरा नसीब था, ये कफन तभी मेरा तबीब था। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। आशूर की शब आए और सकीना का वो रोना, और सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। क्या हो किसी शब को घर न आए हम, तुम हमको न पाओ और तुम्हें हम न पाए, बारी यूं ही नहीं कहना करो बीबी, पहलू में कभी
परिंदों का न देखा करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। असगर को न मानूस करो प्यार से अपने। अकबर की उरूसी के न देखा करो सपने। सुगरा के करीब नाना बैठा करो बीबी। पहलू में कभी भाग भी सोया करो बीबी। पहलू में कभी भाग भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। शबीर देते थे सदा ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। बर्पा करो बेनाज़ा भाई, हुआ हमसे जुदा हम हो गए बेअसरा कोई। मुसीबत गिर पड़ी ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब। हुए उसके कलम कैसा हुआ है ये सितम। तन्हा हुए गुर्बत में हम मातम, करो ज़ेरे अलम ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। आते अलम को देख कर पूछा, चचा को थामा कर दर पे है उनकी मुंतज़र। उसको न हो इसकी खबर ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। मारे गए उसके चचा मालूम, मगर उसको हुआ बाली सकीना बेबहा पीछे की सर करके भूखा ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अकबर से बहना कहो जाकर, चची को पुरसा दो पूछे हमें गम कर जो कहते न है मातम में वो ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। तन्हा हमें अब दान कर क्या कुछ करेंगे क्या कुछ करेंगे पहले शर। बर्बाद होगा घर का घर, कट जाएगा अब मेरा सर ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब ज़ैनब। कर दो
का ना जाने आए कब क़ज़ा या वक्त ऐसा आएगा मातम पे हुज़ूर जफ़ा ज़ैनब अब्बास मेरा मर गया ज़ैनब 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 ज़ैनब अब्बास मेरा हुसैन हुसैन अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं एक हाथ में अलम और मक्के सकीना अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं एक हाथ में अलम और मक्के सकीना अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं कानों पे मश्क मश्क दिल है दिलेर का दरिया को छीनना नहीं है काम देर का इश्क़ तशनगी का मिलेगा न गैर का बिगड़ा हुआ मिजाज है बिगड़ा हुआ मिजाज है बिगड़ा हुआ मिजाज है दर के शेर का अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं चेहरा है वल्लभ मेर का ज़िया से नूर आँखों से डाका वाह वल्लभ का सुरूर बालों का ऐसी के शर्माएंगे अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं प्यासा है शेर काट रास्ता न रोकना आंखें जाओ शेर की जानिब न देखना कैसे जाने है लाजिम न देखना अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास है जलाल में अब्बास है जलाल में अब्बास है जलाल में हरगिज़ न टोकना अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या शबीर का हैदर का पिसर आता है आई शबीर का हैदर का पिसर आता है आई शबीर का हैदर का पिसर आता है जंग करने बनी हाशिम जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है आई शबीर का हैदर का फिसर 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 आता है ऐसा तन्हा तो बहादुर कोई देखा ना सुना कोई देखा ना सुना साथ में अपनी जो लश्कर सा नजर आता है जंग करने
कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है ऐसा तन्हा तो बहादुर कोई देखा ना सुना कोई देखा ना सुना रात में अपनी जो लश्कर नजर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है याद आती है सकीना की बड़े कर्ब के साथ बड़े कर्ब के साथ हमें अब्बास का फोटों पे अगर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भरा या अज़म रो ये ज़ैनब ने कहा ये ज़ैनब ने कहा आई तुम आए नहीं मुँह खोज कर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है दूर से आलम देख के बच्ची बोली के बच्ची बोली देखो दरिया से चचा लौट के घर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है शर्म से रुकता नहीं मैं से बेअब्बास का सर शर्म से रुकता नहीं मैं से बेअब्बास का सर बेअब्बास का सर
हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। बोली ज़ैनब के मदद आके करो ए भाई, करो ए भाई। आओ अब्बास के जिंदाने कदर आता है। जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। लोहा पड़ता है हसन सादिक पुरगम रेहान। लोहा पड़ता है हसन सादिक पुरगम रेहान, पुरगम रेहान। है दो आवाज की इसको ये हुनर आता है। जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। जंग करने बनी हाशिम का कमर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। भाई शबीर का हैदर का फिसर आता है। या हुसैन 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 या हुसैन। हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे। कोई 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 हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे। तेरा इश्क जिस पे सदा खाके करबला तो करे। हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे। कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे। तेरा इश्क जिस पे सदा खाके करबला तो करे।
सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे रश के जिस पे सदा खाके करबला तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा 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 तो करे अलम के नीचे जो मांगो कबूल होती है अलम के नीचे जो मांगो कबूल होती है फूलों से घर से कोई शाख फूलों से घर से कोई शाख कर दो तो करे सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन 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 सा सजदा भला अदा तो करे रश के जिस पे सदा खाके करबला तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा 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 तो करे मैं बाबा आपका बेटा हूँ गो के असगर हूँ मैं बाबा आपका बेटा हूँ गो के असगर हूँ कहो नहीं से सितम की कहो नहीं से सितम की तो इंतहा तो करे हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई 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 हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे रश के जिस पे सदा खाके करबला तो करे हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे लबे फुरात वो बाजू कटा के सोया है लबे फुरात
वफा तो करे सदा खाके करबला तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे मैं बाबा आपका बेटा हूँ गो के असगर हूँ मैं बाबा आपका बेटा हूँ गो के असगर हूँ हो नहीं से तमकी हो नहीं से तमकी इंतहा तो करे हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन पर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है सूरज जरा पहचान ये ज़हरा जो नहीं है बेपर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरे आम जो ये पर्दा नशी है सूरज जरा पहचान
सरेआम जो ये पर्दा नशी है बिखरे हुए रेती पे ते गुलबाग नबी के बिखरे हुए रेती पे ते गुलबाग नबी के इस दुख करी ताश में इस दुख करी ताश में सारा भी नहीं है जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है सूरज ज़रा पहचान सूरज ज़रा पहचान ये ज़हरा तो नहीं है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है ज़हरा की सदा थी फिरोज़ा नबी से ज़हरा की सदा थी फिरोज़ा नबी से ज़ुगरा तेरे रोने की ज़ुगरा तेरे रोने की ये आवाज़ नहीं है जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है सूरज ज़रा पहचान सूरज ज़रा पहचान ये ज़हरा तो नहीं है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है ज़हरा की सदा थी फिरोज़ा नबी से ज़हरा की सदा थी फिरोज़ा नबी से ज़ुगरा तेरे रोने की ज़ुगरा तेरे रोने की ये आवाज़ नहीं है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है सूरज ज़रा पहचान सूरज ज़रा पहचान ये ज़हरा तो नहीं है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है बिखरे हुए रेती पे ते गुलबाग नबी के बिखरे हुए रेती पे ते गुलबाग नबी के इस दुख करी ताश में इस दुख करी ताश में सारा भी नहीं है सरेआम जो ये पर्दा नशी है बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है
जो ये पर्दा नशी है। सूरज जरा पहचान, सूरज जरा पहचान, ये ज़हरा तो नहीं है। बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है। बेपर्दा सरेआम जो ये पर्दा नशी है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती 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 है। कांप उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है। कांप उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कांप उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कौन उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कितने प्यारे हैं तेरे ओनो मोहम्मद ज़ैनब। कितने प्यारे हैं तेरे ओनो मोहम्मद ज़ैनब। इनको तो मौत भी जीने की दुआ देती है। इनको तो मौत भी जीने की दुआ देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा देती है। कांप उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है। कौन खातून जो है मौसे सदा 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 देती है।
सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कभी तकदीर अता करती है गाजी को ना कभी तकदीर अता करती है गाजी को ना कभी ज़ैनब को अलमदार बना देती है कभी ज़ैनब को अलमदार बना देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कब उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कब उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है आज भी रोज़ाए अकबर पे जो आती है ज़िया आज भी रोज़ाए अकबर पे जो आती है ज़िया शाम सुना देती है फातिमा सुबह का पैगाम सुना देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कांप उठती है ज़मीं अर्श हिला देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कभी अकबर कभी गाज़ी को सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कौन खातून जो खैमों से सदा देती है कितने प्यारे हैं तेरे आना मोहम्मद ज़ैनब कितने प्यारे हैं तेरे आना मोहम्मद ज़ैनब इनको तो बहुत कीजिए की दुआ देती है इसको तो मौत दीजिए बाली सकीना अब्बास कृष्णगी मशकोलम बाली सकीना अब्बास कृष्णगी मशकोलम बाली सकीना अब्बास है तेरे
दरिया कृष्ण लब होते हुए सूरत दरिया कृष्ण के माशोलम बारी सकीना कृष्ण के माशोलम बारी सकीना है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा कृष्ण की माशोलम बाली सकीना कृष्ण की माशोलम बाली सकीना हुक्म शबीर की जंजीर थी पैरों में पड़ी भाई को आपा कहा बुले अली वफादारी नहीं वफादारी नहीं आपके जैसा वफादारी नहीं आपके जैसा कृष्ण की माशोलम बारी सकीना कृष्ण की माशोलम बारी सकीना है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा कृष्ण की माशोलम बारी सकीना कृष्ण की माशोलम बारी सकीना कट गए हाथ छिदी मास्ट सकीना अफसोस कर हुआ फूस आला लहर पाता अफसोस तू न वो सारी ज़हरा तू न वो सारी बारी सकीना कृष्ण की माशोलम बाली सकीना कृष्ण की माशोलम बाली सकीना है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा कृष्ण की माशोलम बाली सकीना कृष्ण की माशोलम बाली सकीना तेरे नाम से मसूब ये चर्चा है तेरे नाम से मसूब ये चर्चा कृष्ण की माशोलम बाली सकीना कृष्ण की माशोलम बाली सकीना है सकीना घर खाने पखड़ी कृष्ण लबी रही कैसी है ये खुदा पड़ी को बहलाती है दिल को बहलाती है तेरे दिलासा
आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद गिर गई सरदा ज़ैनब मुज़्तर की उठो लाश उठती नहीं शाबिर से अकबर की उठो आओ दे दो ज़रा सर आओ दे दो ज़रा सर वर्गो सहारा आओ दे दो ज़रा सर वर्गो दिलासा लगी बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद हो गया टुकड़े बदल इब्ने हसन का देखो मरहला आ गया बाद में रसल का पीर का गुनवा वीर का गुनवा तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद मारता पाली सकीना को बला शिवर लई रंग हो जाती जो तुम हो ऐसे तुम पे जमीन भागने को भी न मिल भागने को भी न मिल और से रसता भागने को भी न मिल और से रसता तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद है तेरे नाम से मंसूब ये चर्चा आबाद तशनगी माशको अलम बाल सकीना आबाद तशनगी माशको अलम
चला और दूर से जो शहर मदीना नजर पड़ा, ज़ैनब सी साबिरा का जिगर गम से फट गया। रू करके माँ की कब्र की जानिब ये दी सदा, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं। दाग दिल पर बहातर के लाई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं, अम्मा लौट आई हूँ मैं। जब चले थे यहाँ से तो डर था भरा, जब चले थे यहाँ से तो डर था भरा। गुलसितां तेरा फूलों से आबाद था, गुलसितां तेरा फूलों से आबाद था।
असगरे दिलरुबा अकबरो कासिमो असगरे दिलरुबा सब के सब हो गए करबला में जुदा सबके सब हो गए करबला में जुदा शहर जैसा वो पास भाई मेरा कट गए हाथ सा दिल पे मारा गया नहर पे बेकफन छोड़ आई हूँ लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं वो दुलारी सकीना भतीजी मेरी वो दुलारी सखी ना भतीजी मेरी खा रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी आ रही थी तमाचे में चुप थी खड़ी हाय बेबसी हाय बेचार की वो सितों झेलते झेलते मर गई ऐद की शाम में छोड़ आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं झूमती थी बड़े प्यार से जो गला झूमती थी बड़े प्यार से जो गला दश्ते गुर्बत में से हुआ वो जुदा दश्त गुर्बत में से हुआ वो जुदा एक कतरा दमे ज़िब्हा में ना सका लाडला तेरा प्यार साजहाँ से गया जलते ख़ैमों से आबिद को लाई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं किस ज़ुबान से कहूँ कैसे बतलाऊँ मैं किस ज़बान से कहूँ कैसे बतलाऊँ मैं ज़ख्म बाजू के या दिल के दिखलाऊँ मैं ज़ख्म बाजू के या दिल के दिखलाऊँ मैं हौसला ये कहाँ से भुला लाऊँ मैं हाथ फैला के दिल मैं समा जाऊँ मैं एक क़यामत बका देख आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं लौट आई हूँ मैं जा बजा सर बर ना यूं ही सर खुले जा बजा सब है ना यूं ही सर खुले शाम धूप
की गलियों में खींचे गए शाम कूफा की गलियों में खींचे गए क्या कहूँ वालिए शाम के सामने बांध कर रस्सियों में हमें ले गए आंसू के निकलाने आए हुए रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे हुसैन हाल तुम्हें शाम का सुनाऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी ये शाम वाले करे चाहे 100,000 सिताम ना लड़खड़ाएंगे भैया तेरी बहन के कदम अली की बेटी हूँ बनकर अली दिखाऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी कुछ इस तरह से करूंगी खिताबते कुरान नमाज़ी मानेगा शबीर तुमको सारा जहां बगैर देख के मैं खिलाफ लाऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी बाजार शाम में बालों से ढाप कर चेहरा अली के लहजे की आवाज को भी देख रिदा हिजाब ऐसे किया जाता है बताऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी मेरे अब्बास से कह दो तुम ही खुदा के लिए महर का वादा है गाजी तेरी वफा के लिए अली करीम के रंग में कलम लगाऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी तुम्हारे गम में जो शबीर रोने वाले हैं तेरी कसम वो निराली फकीर वाले हैं गुनाहगार हैं जितने मैं बख्शवाऊंगी रिहाई होगी तो तेरी कब्र पे आऊंगी रिहाई होगी तो तेरी
जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा है जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा है जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा है जिंदा में किसे बाली सकीना ने पुकारा जिंदा में किसे बाली सकीना ने पुकारा अगर लाश सरे क्या खबर का मंजर है पुकारा हवा है जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा 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 है आवाज चचा आएंगे घर लेके चलेंगे आवाज चचा आएंगे जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा है 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 खामोश हो क्यों क्यों नहीं बाबा को बुलाती खामोश हो क्यों क्यों नहीं बाबा को बुलाती क्या खबर का मंजर है उजाला हवा है सकीना है अंधेरा है जफा है सकीना अंधेरा है जफा है जिंदा है सकीना है 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 अंधेरा है जफा है
पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली बाजारों में ज़ैनब घर से बाहर भी नहीं आने वाली घर से बाहर भी नहीं आने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर दे दिया आजाद कराने वाली दे दिया आजाद कराने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में बदबारी में सुलाने वाली बदबारी में सुलाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में दिन की खातिर ये बीबी सालार बनी दिन की खातिर ये बीबी सालार बनी मन के आवाज दिखाने वाली मन के आवाज दिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब नंगे सर पढ़ती रही खुतबे
बाजारों में नंगे सर मरती रही खुतबे बाजारों में हसरे दुश्मन को हिलाने वाले हसरे दुश्मन को हिलाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब कूफी और शामी भी सारे गए ये मान गोहर कूफी और शामी भी सारे गए ये मान गोहर अज़मत दीन को बढ़ाने वाली अज़मत दीन को बढ़ाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में और मजलिसे शबीर में आती है माँ शबीर की कहती है क्या ए मोमिनो तुमसे ये माँ रोती हुई जख्मी है मेरा लाडला जख्मी है मेरा लाडला मरहम मुझे दे दो कोई मरहम तो है अश्के अज़ा रूमाल में ले जाऊंगी इन आंसुओं ने भर दिए हर जख्म तो दिल गिर के धोखाओ में से है मगर भरते नहीं शबीर के ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मातम करो घर लुट गया शबीर का माँ गई शबीर की मातम करो शबीर का नेज़े तले खंजर तले करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का रोती रही रोती रही बाबत से याद सब होते रहे सहरा बिकर लुटा रहा करते रहे शुक्रिया ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का लिपटे सुमे असफाज थी वो लाडली बेटी तेरी मालूम था मौला तुझे फिर ना मिलेगी ये कभी फिर भी सुए
निकल गए करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मौला तेरा या बोलता कुरान है तन से जुदा सर हो गया करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले शबीर नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का रेहान और सरवर करो मजलिस पपा सरवर की अकबर का गम ज़ैनब का गम महराज है तहरीर की मौला रज़ा ये फर्श में करते रहे शुक्र खुदा ना भूले शबीर नहीं भूले ना भूले ये शाम गरीब ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है 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 प्यासे न रहे बाकी प्यासे न रहे बाकी फिर किस लिए पानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है असगर तेरे लाशे को माँ बन के ज़मीं रखे असगर तेरे लाशे को माँ बन के ज़मीं रखे उजड़ी हुई गोदी की उजड़ी हुई गोदी की मासूम निशानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है खून कैसे रुके लोगों अकबर का जवानी में खून कैसे रुके लोगों अकबर का जवानी में है खून नया लेकिन है खून नया लेकिन पर्ची तो पुरानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है मालूम न था शेखो खुद अपने ही हाथों से मालूम न था शेखो खुद अपने ही हाथों से शब्बर की निशानी भी शब्बर की निशानी भी माटी में मिलानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है ये शाम गरीबा है दरिया की रवानी है
जुदा होने को है हम भी जुदा ज़ैनब 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 दी रही शह पर छुरी रोती रही दर पर खड़ी मौला अली की लाडली कहती थी है किस्मत मेरी मैं दुख्तर मुश्किल कुशा मैं दुख्तर मुश्किल कुशा ज़ैनब 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 भाई तेरा मारा गया दश्त बला में बेखता छीनी गई सर से रिदा बिन्ते अली ओ फातिमा क्या जुल्म की थी इंतहा क्या जुल्म की थी इंतहा ज़ैनब 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 कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास वर सरवर नहीं झूले में बस घर नहीं कबीर का लश्कर नहीं दे अब किसे वन में सदा दे अब किसे वन में सदा ज़ैनब 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 सामान लुटा खेमे जले एक रसन बारा गले अहले हराम रोते चले करबल से ये कहते चले लूटी गई है करबला लूटी गई है करबला ज़ैनब 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 या हुसैन 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 शबीर से सीखें कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम
बचाना तुझको ना दिया रोने जो कल अहले सितम ने तुझको ना दिया रोने जो कल अहले सितम ने ज़ैनब तेरे भाई को ये रोता है ज़माना आता है जिसे कुरान सुनाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना याद आता है वो मंजर शबीर का मख्तर में याद आता है वो मंजर शबीर का मख्तर में तीरों भर सीने पे सकीना को सुलाना आता है जिसे नेज़े पे कुरान सुनाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना याद आता है वो मंजर शबीर का मख्तर में याद आता है वो मंजर शबीर का मख्तर में तीरों भर सीने पे सकीना को सुनाना आता है जिसे मेरे पे कुरान सुनाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना ज़हरा की सदा आती थी ये बज़्म-ए अज़ा में ज़हरा की सदा आती है ये बज़्म-ए अज़ा में रेहान ये नौहा सर महशर भी सुनाना आता है जिसे नेज़े पे कुरान सुनाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना शबीर से सीखे कोई इस्लाम बचाना चादर बाजुओं पे तू नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं ना रख अब चादर बाजों पे नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं ना रख अब चादर बाजों पे तू नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं वो तेरे नाना का ये रोज़ा है कोई कूफा शाम की राह नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं ना रख अब चादर बाजों पे तू नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं ना रख अब चादर बाजों पे तू नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं जो चादर उजली थी तेरी रंग उसका कैसे लाल हुआ जो चादर उजली थी तेरी रंग उसका कैसे लाल हुआ अब इसके सिवा अफसोस हो क्या अब इसके सिवा अफसोस हो क्या पहचान सकी सुबह नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं अब चादर बाजुओं पे तू नीले दाग छुपा नहीं ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं ना रख अब चादर बाजुओं
नहीं, ओ ज़हरा की जान शर्मा नहीं। ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। 18 जो तेरे भाई थे, किस रात में तुझसे रूठ गए। 18 जो तेरे भाई थे, किस रात में तुझसे रूठ गए। तो शहजादे क्यों साथ नहीं, तो शहजादे क्यों साथ नहीं, क्यों साथ अब्बास तेरा नहीं। ओ ज़हरा की जान शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। नाना का ये रोज़ा है, कोई खूफा शाम की राह नहीं। ओ ज़हरा की जान शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। ओ किस हाल में करबल से आई ये ज़ैनब अपने शहर में। तू किस हाल में करबल से आई ये ज़ैनब अपने शहर में। तू अब इसके सिवा अफसोस होता, अब इसके सिवा अफसोस होता, पहचान सकी सुबरा नहीं, ज़हरा की जान शर्मा नहीं। अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की जान शर्मा नहीं। ओ तेरे नाना का ये रोज़ा है, कोई खूफा शाम की राह नहीं। ओ ज़हरा की जान शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की मां शर्मा नहीं। ये कौन जवान है साथ तेरे, है कपड़े जिसके मुंह से भरे। ये कौन जवान है साथ तेरे, है कपड़े जिसके मुंह से भरे। किन जख्मों से ये चूर हुआ, किन जख्मों से ये चूर हुआ, आँखों से भी खून बहा नहीं। ओ ज़हरा की जान शर्मा नहीं, अब चादर बाजुओं पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा
जीनत है। चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे। कहाँ फूलता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन। मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम, शाह ज़ीशान 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 है आखिरी ये सलाम। दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा 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 ऐ हुसैन। बख्शते हो गई हो जो कोई खता, 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 अपने खिदमत न हमसे अदा हो सका, अपने खिदमत ना हमसे अदा हो सका। तुम यही है न जी भर के मातम किया, हम यही है ना जी भर के मातम किया, हम यही है न जी भर के मातम किया, हम यही है ना जी भर के मातम किया। तेरी खातिर मैं अपना सर दे दिया, अलविदा 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 ऐ
توجه